गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है लोक अदालत। तो आपके पॉलिटी सेक्शन के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, गवर्नेंस सेक्शन के लिए भी टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो तीसरी नेशनल लोक अदालत जो है वो भी रिसेंटली कंडक्ट की गई है अंडर नेशनल लीगल सर्विसेज अथॉरिटी। और इसमें हमारे को पता है कि लगभग 4.2 करोड़ केसेस जो हैं वो हमारे अभी तक पेंडिंग है ट्रायल कोर्ट्स में। उसमें से लगभग 2.2 करोड़ केसेस जो हैं वो इस साल नेशनल लोक अदालत ने जो है वो रिजॉल्व कर दिए हैं। तो डिजिटल लोक अदालत का बहुत फ़ायदा है, क्योंकि हमने देखा है कि जब इवन दो थर्ड ये नेशनल लोक अदालत की गई है, ये भी डिजिटली ही की गई है। इसमें लगभग 18 लाख पेंडिंग और 63 लाख प्री लिटिगेशन केसेस को सॉल्व कर लिया गया है, जिनकी सेटलमेंट वैल्यू लगभग 5500 करोड़ रुपए है। तो इवन जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डेजिग्नेट है, उन्होंने बोला है कि जो है इम्पोवरिश्ड और पुअर अंडर प्रिविलेज्ड पीपल के लिए जो है लोक अदालत बहुत ही बड़ा एक बून साबित हुआ है। और इससे हमारे कोर्ट के बैकलॉग और केस पेंडेंसी भी कम हुई है। इससे हमारे जो है जस्टिस का जो एक्सेस है फॉर एवरीवन वो भी आसान हो गया है। तो हम थोड़ा बैकग्राउंड देखते हैं लोक अदालत का। तो 1949 में जो है हरिवल्लभ पारिक जी जो हैं वो डिसाइपल जो महात्मा गांधी जी के थे, उन्होंने रंगपुर गुजरात में इस लोक अदालत को पॉपुलराइज़ किया। फिर धीरे धीरे डेवलपमेंट्स के बाद लीगल सर्विसेज अथॉरिटीज़ एक्ट 1987 में पास किया गया, जिसमें चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को पैट्रन इन चीफ बनाया गया नालसा का। ऑब्जेक्टिव ये था कि सबको फ्री लीगल सर्विसेज दी जा सके, खासकर जो है वीकर सेक्शंस ऑफ सोसाइटी को जो है वो फ्री लीगल सर्विसेज दी जा सकें। और इसके लिए ही जो है लोक अदालत को स्टेचुटरी स्टेटस दे दिया गया। अब हम देखते हैं लोक अदालत के बारे में। तो ये एक तरह से ऑल्टरनेटिव डिस्प्यूट रिड्रेसल मैकेनिज्म है, जो कि आपका पार्टी बेस्ड जस्टिस पर काम करता है, मतलब जिसमें पीपल और जजेस इकट्ठे मिलकर काम करते हैं ताकि अफोर्डेबल और टाइमली जस्टिस जो है प्रोवाइड किया जा सके। अब इसमें जो है आपके स्टेट लेवल पर और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो है हाई कोर्ट के साथ मिलकर जो है ये लोक अदालत कंडक्ट की जाती हैं। और नेशनल लेवल पर सुप्रीम कोर्ट से लेकर तालुक लेवल तक जो है ये अदालत जो है नेशनल लोक अदालत एक ही दिन में टॉप से लेकर बॉटम लेवल तक जो है कंडक्ट की जाती है। अब इसमें कॉम्पोजिशन क्या होती है, जो हर लोक अदालत के अंदर सर्विंग और रिटायर्ड जुडिशल ऑफिसर्स होते हैं। और इसमें और भी जो है मेंबर्स आ सकते हैं एज़ पर स्टेट या डिस्ट्रिक्ट अथॉरिटी की सर्विसेज कमेटीज़। और इसमें जो मेंबर्स ऑफ लोकसभा मेंबर्स ऑफ लोक अदालत जो होते हैं वो स्टेचुटरी काउंसलर्स होते हैं सिर्फ, मतलब वो सिर्फ परसुएड कर सकते हैं पार्टीज़ को, प्रेशराइज या कोर्स नहीं कर सकते। और वो खुद किसी इनिशिएटिव पर जो है वो एक्शन नहीं ले सकते, मतलब जब तक पार्टीज़ खुद कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए उनके पास नहीं जाएंगी तब तक वो कोई इनिशिएटिव नहीं ले सकते हैं। फिर इसके अंदर कैसे केसेस जाते हैं, कौन से टाइप ऑफ केसेस जो है लोक अदालत में जाते हैं, जैसे ट्रांसफ़र और चेंज ऑफ लैंड टाइटल केसेस, कंपाउंडेबल क्रिमिनल ऑफेंसेस, फैमिली डिस्प्यूट, फॉरेस्ट लैंड पे कोई इंक्रोचमेंट है, लैंड एक्विजिशन के डिस्प्यूट्स, ये सब जो है मोटर एक्सीडेंट क्लेम्स, ये सब जो डिस्प्यूट्स हैं ये आपके लोक अदालत में जाते हैं। लोक अदालत की उन मैटर्स पे कोई जुरिस्डिक्शन नहीं है जो कि अनकम्पाउंडेबल है या फिर नॉट कंपाउंडेबल। कंपाउंडेबल कौन से होते हैं? कंपाउंडेबल मतलब होता है जिसमें पार्टीज़ को आप जो है हमारे कोर्ट्स अलाउ करते हैं कि आप आपस में सेटलमेंट कर लो। लेकिन अगर वो कोई भी ऑफेंस नॉट कंपाउंडेबल है जिसमें आप कोर्ट अलाउ नहीं करता कि जो है पार्टीज़ आपस में सेटलमेंट कर सके, जैसे समझ लो कोई मर्डर का केस है, रेप का केस है, उस केसेस में तो ऑफकोर्स कोर्ट नहीं अलाउ करेगा ना कि हाँ विक्टिम और जो है जो अक्यूज्ड हैं वो आपस में कॉम्प्रोमाइज़ कर लें। तो उन केसेस को जो है वो नॉट कंपाउंडेबल होते हैं। उनको जो है लोक अदालत जो है वो रिजॉल्व नहीं कर सकता। ठीक है, लोक अदालत के पास जुरिस्डिक्शन होती है कि वो कॉम्प्रोमाइज़ और सेटलमेंट करवाए बिटवीन द पार्टीज़। किन केसेस में? जो केसेस कोर्ट के अंदर पेंडिंग है, जो उस उनकी जुरिस्डिक्शन में आते हैं। समझ लो एक जिस एरिया में वो लोक अदालत होगी उस एरिया के जो जुरिस्डिक्शन में जो आपके मैटर्स आएंगे वो जो है लोक अदालत रिजॉल्व कर सकता है। और लोक अदालत के जो अवार्ड होता है वो डिक्री ऑफ अ सिविल कोर्ट के बराबर होता है, मतलब फाइनल और बाइंडिंग होता है ऑल पार्टीज़ पे। और इसके अगेंस्ट कोई अपील नहीं की जा सकती किसी और कोर्ट में। अब ये फ्री होता है, इसलिए कोई कोर्ट फी भी पे नहीं करने की ज़रूरत पड़ती पार्टीज़ को इन लोक अदालत। ठीक है, नेक्स्ट हमारा टॉपिक है रामसर साइट्स। तो ये इन्वायरमेंट का टॉपिक है। ऑफकोर्स अभी हमने 3-4 दिन पहले इसको डिस्कस किया है। तो इंडिया ने 11 और वेटलैंड्स जो है वो रामसर साइट्स में जो है वो ऐड कर दिए इंडिया में। और 75 रामसर साइट्स जो है अब इंडिया में हो चुकी हैं। लगभग 13,26,677 हेक्टेयर एरिया जो है कंट्री में रामसर साइट्स के अंदर जो है वो आ चुका है। ठीक है, सो
मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने 11 न्यू साइट्स को जो है वो नोटिफाई किया है, और इंडिया ने 1 फरवरी 1982 को ये कन्वेंशन साइन किया था। सबसे ज़्यादा रामसर साइट्स इंडिया में तमिलनाडु में सिचुएटेड है। तो ये कुछ आपके बेसिक फैक्ट्स हैं। देखते हैं रामसर कन्वेंशन के बारे में भी अब। एक इंटर गवर्नमेंटल इन्वायरमेंट ट्रीटी थी, 1971 में साइन हुई, 1975 में एनफोर्स हुई। इंडिया ने ऑफकोर्स 1982 में ज्वाइन किया। इसका ये बहुत लंबा नाम है जो कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स, ये इसका नाम है, ऑफिशियल नेम है, लेकिन जनरली हम इसको कन्वेंशन ऑन वेटलैंड्स कहते हैं। इसके 3 पिलर्स हैं कि हम तो आपके जो है वेटलैंड्स को वाइज यूज़ रखें, सूटेबल वेटलैंड्स को जो है इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस के लिए डेजिग्नेट करें, और इंटरनेशनली कोऑपरेट करें ताकि वेटलैंड्स को कैसे प्रोटेक्ट किया जा सके। तो इंडिया में इस टाइम पर आपको देखा भी 75 रामसर साइट्स हो चुकी हैं। सबसे पहली साइट जिसमें को डेजिग्नेट किया गया था रामसर साइट, वो ऑस्ट्रेलिया की कोबर्ग पेनिनसुला था। रामसर कन्वेंशन जो है वो लीगली बाइंडिंग नहीं होता है, और ना ही वो यूनाइटेड नेशंस का पार्ट होता है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़। तो ये आपका इकोनॉमी सेक्शन या एग्रीकल्चर सेक्शन स्पेसिफिकली उसके लिए इंपॉर्टेंट है। तो यूनियन होम या एंड कॉर्पोरेशन मिनिस्टर अमित शाह जी ने जो है उन्होंने बोला कि गवर्नमेंट एक मॉडल लॉ लेके आएगी ताकि प्राइमरी एग्रीकल्चरल कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ को इंडिया में गवर्न किया जा सके। तो अब आपको पता है कि हमारे रूरल क्रेडिट के लिए 3 लेवल पर जो है क्रेडिट स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं, कोऑपरेटिव क्रेडिट स्ट्रक्चर्स बनाए गए हैं। पहला है प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो कि विलेज लेवल पर काम करती हैं, सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स जो आपके डिस्ट्रिक्ट लेवल पर काम करते हैं, और स्टेट कोऑपरेटिव बैंक जो आपके स्टेट लेवल पर काम करते हैं। तो जो स्टेट कोऑपरेटिव बैंक्स या डिस्ट्रिक्ट कोऑपरेटिव बैंक, जिनको आप सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक्स भी कह रहे हो, वो तो आपके स्टेट कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ एक्ट के अंदर आते हैं, इसीलिए वो आरबीआई से रेगुलेटेड है। लेकिन जो आपकी प्राइमरी एग्रीकल्चर कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ हैं, ये किसी भी जो है एक्ट के अंदर नहीं आती हैं, या इवन बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के अंदर नहीं आती है, तो इसलिए आरबीआई इनको रेगुलेट नहीं कर पाता है। ये लोएस्ट टीयर के अंदर आती है हमारी शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट के अंदर। जो आपका शॉर्ट टर्म कोऑपरेटिव क्रेडिट है रूरल एरियाज़ के लिए, उसमें जो लोएस्ट टीयर है, मतलब आपका विलेज लेवल, वहाँ पर प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ काम करती हैं। लगभग 13 करोड़ फार्मर्स जो हैं वो इसके मेंबर्स हैं, और शॉर्ट से मीडियम टर्म लोन्स देने का काम करती हैं, एग्रीकल्चर बोरोअर्स ऑफ द विलेज के साथ डील करती हैं। फार्मर्स की एक एसोसिएशन है जिसमें कि इक्वल लेवल ऑफ राइट्स जो है सारे मेंबर्स जो है उनको दिया गया है। अब एडिक्वेट अमाउंट ऑफ फंड्स ये सेंट्रल फाइनेंशियल एजेंसी से भी जो है वो बोरो करती हैं ताकि अपने मेंबर्स को हेल्प कर सकें। सीड्स, फर्टिलाइजर्स, इंसेक्टिसाइड्स ये सब सप्लाई करने का काम भी करती हैं। लाइट मशीनरी अगर ज़रूरत हो एग्रीकल्चर पर्पज़ के लिए फार्मर मेंबर्स को, उनको भी देते हैं ये, ठीक है। तो अब फार्मर्स को क्रेडिट एग्रीकल्चर पर्पज़ के दिलवाने के लिए इस सोसाइटीज़ को बनाया गया है। फार्मर्स के अंदर सेविंग हैबिट्स भी प्रमोट करती है, अलग अलग सेविंग स्कीम्स लाकर। फिर जो है इसमें प्रॉब्लम्स कहाँ आ रही है? अब जब आपको इतना सब कुछ अच्छा लग रहा है कि हाँ फार्मर्स का कितना बेनिफिट हो रहा है, तो इसमें प्रॉब्लम क्या है? पहली बात तो ये जो प्राइमरी एग्रीकल्चर क्रेडिट सोसाइटीज़ जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स में को कवर नहीं करती हैं। दूसरा, जितने भी जो खासकर लोन्स दिए जाते हैं वो लार्ज लैंड ओनर्स को दिए जाते हैं रादर देन स्मॉल कल्टीवेटर्स। तो ये आपकी बेसिक प्रॉब्लम हमारी एग्रीकल्चर सिस्टम में यही है ना, कि बड़े बड़े फार्मर्स जो हैं वो ज़्यादा पैसा एग्रीकल्चर क्रेडिट जो है वो जमा करके बैठे हैं, और स्मॉल कल्टीवेटर्स को नहीं मिल पाता है। इवन एमएसपी में भी यही होता है। अब इवन जो रिसोर्सेज हैं पैक्स के, वो भी बहुत कम होते हैं इन रिलेशन टू द डिमांड जो कि आपके रूरल इकोनॉमी में जनरेट होती है। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्माइल स्कीम। ये आपके सोशल इश्यूज़ के लिए इंपॉर्टेंट है। तो गवर्नमेंट जो है प्लान कर रही है कि वो बेगर्स जो हैं, जो पीपल एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, उनको आइडेंटिफाई करके रिहेबिलिटेट करें अंडर द स्माइल स्कीम। तो स्माइल 75 नाम का इनिशिएटिव शुरू किया गया है, और ऑन द ईव ऑफ 75 ईयर्स ऑफ इंडिपेंडेंस। और इसमें म्यूनिसिपल कॉरपोरेशंस को कहा गया है कि वो आइडेंटिफाई करें कि उनके एरिया में कौन कौन से पीपल जो है वो एंगेज्ड इन द एक्ट ऑफ बेगिंग, और उनको रिहेबिलिटेट करें, ठीक है। तो हमारे 2011 के सेंसस के हिसाब से तो टोटल पॉपुलेशन ऑफ पर्सन्स एंगेज्ड इन एक्ट ऑफ बेगिंग जो है वो लगभग 4.13 लाख है, लेकिन ऑफकोर्स अभी ये फिगर बढ़ गई होगी। अब स्माइल प्रोजेक्ट है क्या? ये एक अम्ब्रेला स्कीम है स्माइल नाम से। सपोर्ट फॉर मार्जिनलाइज्ड इंडिविजुअल्स फॉर लाइवलीहुड एंड एंटरप्राइज, वेलफेयर मेजर्स प्रोवाइड करने का इनका ऑब्जेक्टिव है ट्रांसजेंडर कम्युनिटी को और पीपल जो कि बैगिंग के एक्ट में इन्वॉल्व है। तो 2 लोगों के लिए, 2 कैटेगरी ऑफ पीपल के लिए स्कीम को निकाला गया है।
अब इसमें सोशल सिक्योरिटी प्रोवाइड की जाती है विद द सपोर्ट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, यूटी, लोकल अर्बन बॉडीज़, वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, कम्युनिटी बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड इंस्टीट्यूशंस के साथ मिलकर मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट इस स्कीम को इम्प्लीमेंट कर रही है। ठीक है, अब जो आपकी सेंट्रल, अभी इसके अंदर ना दो सब स्कीम्स होती हैं, एक तो ट्रांसजेंडर पर्सनस के लिए, एक आपके जो है पर्सनस एंगेज इन द एक्ट ऑफ बेगिंग के लिए। तो जो ट्रांसजेंडर पर्सनस हैं उनको रिहेबिलिटेट करने के लिए स्कॉलरशिप्स दी जा रही हैं, ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन सेल बनाया गया है, और उनकी मेडिकल हेल्थ के लिए भी जो है पीएमजे के अंदर उनको सपोर्ट दी गई है। फिर जो है आपके एक्ट ऑफ बेगिंग के लिए उनको सर्वे और आइडेंटिफिकेशन की जा रही है, उनकी मोबिलाइजेशन की जाएगी, रेस्क्यू शेल्टर होम प्रोवाइड किए जाएंगे और उनकी कॉम्प्रिहेंसिवली रीसेटलमेंट की जाएगी। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड एलिफेंट डे। तो ये आपका एनवायरनमेंट के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो वर्ल्ड एलिफेंट डे जो है उसमें पीएम मोदी ने इंडिया को जो है एक तरह से अगस्त मलाए तमिलनाडु में जो आपका रिज़र्व है उसको न्यू एलिफेंट रिज़र्व जो है वो डिक्लेयर किया है। और इंडिया में जो है लगभग 60% ऑफ ऑल एशियन एलिफेंट्स रहते हैं। ये भी जो है इंडिया की कमिटमेंट टू प्रोटेक्ट द एलिफेंट्स जो है वो दिखाता है। ठीक है, तो फिफ्थ तमिलनाडु को जो है फिफ्थ एलिफेंट रिजर्व मिला है अगस्थ्यमलाई के रूप में। और अब टोटल एरिया अंडर एलिफेंट रिजर्व्स इंडिया के अंदर अब 76,508 स्क्वायर किलोमीटर हो चुका है। लगभग 14 स्टेट्स में हमारे ये एलिफेंट रिजर्व्स एग्जिस्ट करते हैं। तो अब जो है अननेचुरल एलिफेंट डेथ्स को कर्ब करने के लिए हमने जो है ट्रैक कैजुअलिटीज़ डिस्कस करने का ठाना है रेलवे मिनिस्ट्री के साथ इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने। ह्यूमन एलिफेंट कॉन्फ्लिक्ट को भी जो है एड्रेस करने के लिए इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने सोचा है। डेथ्स ऑफ एलिफेंट्स इन ओडिशा के लिए भी जो है वो एक पैनल बनाया गया है कि कैसे उन इंसिडेंट्स को जो है वो इन्वेस्टिगेट किया जाए, और सेपरेट मैनेजमेंट प्लान्स भी एलिफेंट्स के लिए बनाने को सोचा गया है। तो 2017 के सेंसस बाय प्रोजेक्ट एलिफेंट के मुताबिक 60% ऑफ ग्लोबल पॉपुलेशन ऑफ एलिफेंट्स जो है वो इंडिया में रहते हैं। और इस डे को, जो वर्ल्ड एलिफेंट डे है, इसको पैट्रिशिया सिम्स एंड एलिफेंट रीइंट्रोडक्शन फाउंडेशन ने अगस्त 12, 2012 को जो है वो लॉन्च किया था। तब से हर साल जो है ये प्रोजेक्ट एलिफेंट मनाया जाता है। ठीक है, अब एशियन एलिफेंट्स के बारे में देखते हैं जो कि इंडिया में पाए जाते हैं। तो इंडिया उनका नेचुरल होम है। अपार्ट फ्रॉम इंडिया, नेपाल, बांग्लादेश, भूटान और म्यांमार में भी पाए जाते हैं। एंडेंजर्ड स्पीशीज़ हैं। शेड्यूल 1 ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर उनको प्रोटेक्शन मिली है। लगभग 50,000 से 60,000 एशियन एलिफेंट्स वर्ल्ड में होते हैं, वर्ल्ड में है। उसमें से लगभग 60,000 जो पॉपुलेशन है वो सिर्फ इंडिया में ही है। ठीक है, इवन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है वहाँ पर उस टाइम पर भी जो है हमारी सील्स के ऊपर एशियन एलिफेंट्स की जो है वो एंगेविंग्स होती थी। तो इसका मतलब ये बहुत ही पुराने स्पीशीज़ ऑफ एलिफेंट्स हैं। ठीक है, अब प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या है? ये एक सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम है जो कि 1992 में फरवरी में लॉन्च की गई थी। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है कोस्टल इकोसिस्टम्स। तो ये भी टॉपिक आपका इन्वायरमेंट के लिए इंपॉर्टेंट है। तो सीएजी की एक रिपोर्ट आई है पार्लियामेंट में जिसमें कंजर्वेशन ऑफ कोस्टल इकोसिस्टम्स 2015 से 2020 के बीच में कैसे इन्वायरमेंट मिनिस्ट्री ने किया है उसको जो है ऑडिट किया गया है। तो इसके अंदर बहुत सारी वायलेशंस बताई गई है। तो इसमें कहा गया है कि मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने आज तक नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी को ही जो है परमानेंट बॉडी डिक्लेयर नहीं किया या नोटिफाई नहीं किया है। तो वो एक तरह से एक एड हॉक बॉडी की तरह काम कर रही है। इवन ऐसे भी इंस्टेंस दिस देखे गए हैं कि जब एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी जो है वो प्रेजेंट ही नहीं थी जब प्रोजेक्ट्स जो है डेलिब्रेट किए जा रहे थे। साइंटिफिक एक्सपर्ट्स और सीनियर ब्यूरोक्रेट्स आपके एक्सपर्ट अप्रेजल कमेटी में होते हैं, लेकिन फिर भी उसके जो मेंबर्स हैं वो लगभग हाफ से भी कम रहे हैं। यही हाल स्टेट्स के लेवल पर है। स्टेट्स जो है स्टेट कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी जो है वो भी कई स्टेट्स में कॉन्स्टिट्यूट नहीं की गई है। इवन डिस्ट्रिक्ट लेवल पर भी जो आपके कमेटीज़ होती हैं वो भी पार्टिसिपेट नहीं करती हैं इन मीटिंग्स में। तो एक तरह से जो है हमने देखा है कि बहुत से ऐसे भी प्रोजेक्ट्स हैं जिनमें इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट असेसमेंट के अंदर बताया गया था कि इनएडिक्वेसीज हैं इस प्रोजेक्ट को अप्रूव करने के लिए, फिर भी उन प्रोजेक्ट्स को अप्रूव किया गया है। तो अब हम देखते हैं कि इंडिया में कोस्टल जोन रेगुलेशन कैसे की जाती है। तो ऑफ कोर्स एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर जो है एनवायरनमेंट मिनिस्ट्री टाइम टू टाइम नोटिफिकेशंस जो है वो जारी करती रहती है। तो ह्यूमन और इंडस्ट्रियल एक्टिविटी को कोस्ट लाइन के आसपास जो है वो रेगुलेट करने के लिए ये कोस्टल रेगुलेशन जोन्स रूल्स बनाए जाते हैं। तो हमारे जो है इसमें डिलिनेशन की गई है। 4 कैटेगरी के कोस्टल रेगुलेशन जोन्स बनाए गए हैं। पहला है आपका इकोलॉजिकली सेंसिटिव एरियाज़, जो आपके खासकर एरियाज़ जो बिल्कुल ही आपके जो है
कोस्ट के बिल्कुल पास पड़ते हैं, मतलब आपके जो है सी के बिल्कुल पास पड़ते हैं, जो आपके जहाँ पर मैंग्रोव्स, कोरल रीफ्स, बायोस्फीयर, जहाँ पर सबसे ज़्यादा मैक्सिमम प्रोटेक्शन की ज़रूरत है, वो ये आपका CRZ 1 में आता है एरिया। CRZ 2 में शोर लाइन एरियाज आते हैं, जहाँ पर आपके शोर लाइन तक आपका जो है एरिया डेवलप किया जा सकता है और म्यूनिसिपल लिमिट्स में जो है वो फॉल करता है, ठीक है। तो यहाँ पर जो जो आपके है, आपके विलेजेस और टाउन्स जो है वो आपके वेल एस्टैब्लिश्ड ऑलरेडी है। यहाँ पर बिल्डिंग्स परमिसेबल है, लैंडवर्ड साइड पर बिल्डिंग परमिसेबल है। डिसैलिनेशन प्लांट्स भी जो है यहाँ पर लगाए जा सकते हैं। आपका थर्ड कैटेगरी आती है अनडिस्टर्ब्ड एरियाज़। ये आपके रिलेटिवली अनडिस्टर्ब्ड एरियाज़ हैं, जो कि आपके कैटेगरी 1 और कैटेगरी 2 दोनों में नहीं आते हैं, और ये रूरल अर्बन दोनों एरियाज़ हो सकते हैं, ठीक है। बिटवीन 0 to 200 मीटर्स फ्रॉम हाई टाइड लाइन नो डेवलपमेंट जोन डिक्लेयर किया गया है। कुछ एक्टिविटीज़ परमिटेड हैं, कुछ एक्टिविटीज़ जो है वो आपकी, जैसे आपकी एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एटॉमिक एनर्जी डिपार्टमेंट के कोई प्रोजेक्ट्स, माइनिंग ऑफ रेयर मिनरल्स, ये कुछ आपके जो है बेसिक आपके एक्टिविटीज़ को परमिट किया गया है। और 200 से 500 मीटर्स ऑफ HTL जो है आपका जो एरिया है, उसमें जो है कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज फॉर लोकल कम्युनिटीज़ जो है वो परमिट किया गया, और टूरिज्म प्रोजेक्ट्स को भी परमिट किया गया है। जो आपका फोर्थ कैटेगरी आता है वो आता है टेरिटोरियल एरिया। ये आपका वो एक्वेटिक एरिया है लो टाइड लाइन से जो शुरू होता है और आपके टेरिटोरियल लिमिट्स तक जाता है। इसमें कोई भी रिस्ट्रिक्शन नहीं है ट्रेडिशनल फिशिंग के लिए। इवन आपका जो अनट्रीटेड सीवेज और जो सॉलिड वेस्ट है, इसको यहाँ इन एरियाज़ में डंप नहीं किया जा सकता, ठीक है। तो अब आपको पता होगा कि ड्राफ्ट कोस्टल मैनेजमेंट रूल्स भी आए हैं, जिसके अंदर इन 0 to 200 मीटर्स की जो है डेफिनेशन को, और 200 से 500 मीटर्स ऑफ HTL जो है, इनको चेंज किया गया। बट वो अभी ड्राफ्ट है, इसीलिए उसको हम अभी मान नहीं रहे हैं जब तक वो परमानेंटली जो है वो नोटिफाई नहीं किए जाएंगे, ठीक है। अब इम्प्लीमेंटिंग एजेंसीज कौन ये कोस्टल रेगुलेशन जोन्स की जो है को इम्प्लीमेंट करता है, तो 3 लेवल पर जो है इसकी इम्प्लीमेंटेशन की जाती है। सेंट्रल लेवल पर नेशनल कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटी, स्टेट लेवल पर स्टेट या यूनियन टेरिटरी की कोस्टल जोन मैनेजमेंट अथॉरिटीज़, और डिस्ट्रिक्ट लेवल पर डिस्ट्रिक्ट लेवल कमेटीज़ जो है वो हर डिस्ट्रिक्ट में कोस्टल स्ट्रेच को देखती हैं, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम। तो एक विमेन है बेंगलुरु में, जिन्होंने पटिशन फाइल की है दिल्ली हाई कोर्ट में, कि वो अपने नोएडा बेस्ड फ्रेंड को जो है वो रोकना चाहती हैं, क्योंकि वो क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से जो है वो सफ़र कर रही हैं, और वो यूरोप में ट्रैवल करके फिजिशियन असिस्टेड यूथेनेशिया क्या होता है, मतलब वो अपने आप को मारना चाहती हैं एक तरह से, क्योंकि वो इससे सफ़र नहीं कर सकती और क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम से। तो उनको रोकने के लिए जो है ये पटिशन फाइल की गई है। तो हम देखते हैं कि ये बीमारी है क्या, या ये जो है डिसीज़ होती क्या है। तो इसको हम मायल्जिक एंसेफेलोमाइलेटिस भी कहते हैं। ये आपके नर्वस सिस्टम, इम्यून सिस्टम और बॉडी के एनर्जी प्रोडक्शन को इम्पैक्ट करती है। इसको US इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिसिन ने इसके लिए एक नाम और प्रपोज किया था, सिस्टमिक एक्सर्जन इंटॉलरेंस डिसीज़ साइड, ठीक है। अब ये होती क्यों है, क्योंकि कई बार वायरल और बैक्टीरियल इन्फेक्शंस हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंसेस हो सकते हैं, कई बार जेनेटिकली भी हो सकती है। ये कोई स्पेसिफिक टेस्ट तो नहीं होता है इसको आइडेंटिफाई करने का, लेकिन जो है डॉक्टर्स मेडिकल एग्जामिनेशन करते हैं, ब्लड एंड यूरिन टेस्ट से जो है पता लगाते हैं कि ये क्रॉनिक फटीग सिंड्रोम किसी को है या नहीं है। जनरली ये 40 से 60 साल के बीच के लोगों को होता है। कोई स्पेसिफिक ट्रीटमेंट या इसका क्योर नहीं अवेलेबल है अभी, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है स्वास्तिका। तो अभी पिछले कुछ टाइम से जो है स्वास्तिका न्यूज़ में चल रहा है। अब रिसेंटली क्या हुआ है कि न्यू साउथ वेल्स जो ऑस्ट्रेलिया की सेकंड स्टेट बनी है, जिसने स्वास्तिका के डिस्प्ले को क्रिमिनलाइज किया है। ऑफ कोर्स एक्सेप्शन ये दी गई है कि एजुकेशनल और रिलीजियस पर्पज़ के लिए हिंदूज, जैन्स और बुद्धिस्ट के उसको अलाउ किया गया है, ठीक है। सो अब जो है स्वास्तिका का इंडिया में सिविलाइजेशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है, बिकॉज वो हमारे हिंदुज़म के अंदर जो है गुड फॉर्चून और वेलबींग को डिनोट करता है। लेकिन जो है आपका नाजीज़ का जो आपका स्वास्तिका था, जिसको ब्लैक हैकन क्रूज कहते हैं, वो आपका जो है ब्लैक हमारा जो स्वास्तिका उसके कंपैरिजन में जो है वो रेड और येलो कलर का होता है, और वो टिल्टेड टू द राइट नहीं होता। मतलब हमारा स्वास्तिका टिल्टेड टू द राइट नहीं होता एज़ कम्पेयर टू नाजी का स्वास्तिका, ठीक है। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है वर्ल्ड संस्कृत डे। तो आपका ये भी आर्ट एंड कल्चर के लिए टॉपिक इंपॉर्टेंट है, और आपका ऑफ कोर्स ये स्वास्तिका भी आपके आर्ट एंड कल्चर के लिए ही इंपॉर्टेंट था। तो PM मोदी जो है उन्होंने वर्ल्ड संस्कृत डे पर जो है आपको जो है विशेज़ जो है वो एक्सटेंड की हैं।
तो वर्ल्ड संस्कृत डे को जो है विश्व संस्कृता दिनम भी कहा जाता है, और ये श्रवण पूर्णिमा को मनाया जाता है, जो कि आपकी श्रवण मंथ की जो है पूर्णिमा होता है, ठीक है। तो इस साल जो है ये लगभग आपका 12 अगस्त को पड़ा, और इसको जो है संस्कृत एक ऑर्गेनाइजेशन है संस्कृत भारती, वो इस डे को प्रमोट करने के लिए काम करती है। सो नाउ लेट अस सी ऑल दीज टॉपिक्स इन इंग्लिश. So the first topic is Lok Adalat. So this topic is important for your polity and governance section. So recently the third national Lok Adalat was conducted across the country, except of course in Delhi, under the aegis of National Legal Services Authority, and it was presided over by the Chief Justice of India designate UU Lalitji. And we know that almost 81 lakh cases have been resolved, and we have a huge pendency of 4.2 crore cases, out of which 2.2 crore cases have been relieved this year through 3 national Lok Adalats which have been conducted till now. So the success of digital Lok Adalats is very distinguishing, because this third national Lok Adalat has settled up almost 81 lakh cases, which involve 18 lakh pending cases and 63 lakh pre-litigation cases, with a settlement value of almost 5,500 crore rupees. So the Chief Justice of India designate has also said that these Lok Adalats have become portals for the impoverished and underprivileged to attain justice, and it has made justice easy for everyone to access it, okay, regardless of financial means. So what is the background of Lok Adalats? Of course, it has existed even before it got statutory recognition in India. Like in 1949, Hari Vallabh Parekh, who was the disciple of Mahatma Gandhi, he popularized this in Rangpur, that is in Gujarat. And NALSA was constituted by the Legal Services Authorities Act of 1987, and Chief Justice of India was made the patron-in-chief of NALSA. So the aim of NALSA is to provide free legal services to the weaker sections of society and to organize Lok Adalats for the amicable settlement of disputes. So Lok Adalats have been given basically statutory status under this Legal Services Authorities Act of 1987. And what are these Lok Adalats? So these are the alternative dispute redressal mechanisms, which is a party-based mechanism in which the judges and the people work together to provide affordable and timely justice. So, what is the organization of Lok Adalat? Of course, at the state authority or district state authority or district authority, or even the High Court Legal Services Committee or Tehsil Legal Services Committee may organize Lok Adalats in their areas of jurisdiction as and when they deem it fit. National Lok Adalats are held at regular intervals, and it is held on a single day, in which all courts from the Supreme Court to the Taluk level, they start disposing cases in large numbers. Every Lok Adalat constitutes of a serving or retired judicial officers, and even other people may also be specified by the state or district authority or the High Court or Tehsil Legal Services Committees. Members of Lok Adalat have a statutory conciliator, are only statutory conciliators. So they can only persuade the parties. They cannot force or pressurize or coerce them into action. And this Lok Adalats cannot decide the matters on their own initiative. Only if the parties want to have a compromise or settlement, only then the Lok Adalats come into picture. So what are the types of cases that Lok Adalats address? So the transfer or change of land title cases, compoundable criminal cases, family disputes, land acquisition disputes, motor accident claims, etc. All these disputes are handled by Lok Adalats. But they do not have the jurisdiction to address cases which are not compoundable. Okay, so certain cases are compoundable. So what compoundable means? Those cases in which the court allows the parties to have a compromise. But in non-compoundable cases, like it's a case of rape or murder, of course the court would not allow the parties that is a victim and the accused to have a settlement outside the court. So those are the non-compoundable cases. So the under all these cases, the Lok Adalats do not have any jurisdiction of such cases over such cases. So Lok Adalats have the jurisdiction to determine and arrive at a compromise or settlement between the parties in matters which are pending before the court, or they fall within their jurisdiction in which the Lok Adalat is functioning.
and the orders or the awards made by Lok Adalats are deemed to be a decree of civil court. They are final and binding on all parties, and no appeal against such an award lies before any court of law. Because there is no court fee payable when a matter is filed in the Lok Adalat, that's why it has become a conduit for the for the poor to access justice from the judicial system. So the next topic is Ramsar sites. So this topic is important for your environment section. So India has again added 11 more wetlands to the list of Ramsar sites. Now the total number of sites, Ramsar sites in India stand at 75 number. So Ministry of Environment has recently added these sites, and India signed this Ramsar Convention on 1st of February 1982. In India, Tamil Nadu has the maximum number of Ramsar sites. So, what is Ramsar Convention? So, it's an intergovernmental environment treaty, and it came into force in 1975. It was signed in 1971. It is also called the Convention on Wetlands, but this is the official name, Convention on Wetlands of International Importance, especially as waterfowl habitat. And what are the three pillars of this convention? So, wise use of all wetlands, designation of suitable wetlands for international importance, and even cooperation at international level on transboundary wetlands. For these purposes, this convention was founded. So, India currently has 75 Ramsar sites. The Cobour Peninsula in Australia became the first Ramsar site in 1974. This Ramsar Convention, of course, is not legally binding, and it is not even the part of United Nations. So the next topic is primary agricultural cooperative societies. So Union Cooperation Minister Amit Shah ji. So this topic is of course important for your economy section or agriculture section per se. So Union Home and Cooperation Minister Amit Shah ji has said that government will bring model bylaws to govern the primary agricultural cooperative societies in the country, and the aim is to ensure flow of credit to the agriculture sector. Okay, so in the at the rural level, the flow of credit, short-term and long-term cooperative credit structures are premised upon three levels or it's a three-tier system at the rural level for short-term and long-term cooperative credit. At the village level functions these primary agricultural credit societies. At the district level functions these central cooperative banks, which are also called district cooperative banks, district central cooperative banks. And at the state level, there are state cooperative banks. While these two, the state and central cooperative banks, that is the state and district level banks, they are registered under the State Cooperative Societies Act, and that's why they are regulated by the RBI. But these primary agriculture credit societies, they do not fall under the purview of Banking Regulation Act of 1949. That's why they are not regulated by the RBI. They constitute the lowest tier of the three-tier short-term cooperative credit, and they comprise of 13 crore farmers in India. They provide short and medium-term loans. They deal with the agricultural borrowers of the village. PACs are basically the association of farmers, and they have equal level of rights on all members of society. Their area of operation is limited to the village only, and they disperse adequate amount of funds which are given by the central financial agencies to help the farmers or their members in timely manner. They also make arrangements for the supply of seeds, fertilizers, insecticides, etc. And they also provide marketing facilities to the members or the farmers. So, because they help farmers to get credit for the agriculture purposes, they also promote saving habits among its farmers through several saving schemes. The government schemes which are implemented at the local level, these primary agricultural credit cooperative societies, they also help the government schemes to be implemented at the village level. But there are certain challenges also, like northeastern states do not have these packs. The most of the credit that is generated by these packs are usurped by the large landowners, and the small cultivators are bereft of this credit. There is also less resources available at the disposal of packs if we compare it with the demand that is being generated at the rural economy for short and medium term credit needs. So these are certain challenges of the packs. So anyways, the next topic is SMILE scheme. So this topic is important for your social issues. So government is planning to undertake the task of identifying and rehabilitating people
who are engaged in the act of begging under the scheme the named Smile. So Smile 75 initiative has been launched to mark the 75 years of independence of India, and it will, under this initiatives, identified municipal corporations will undertake a comprehensive rehabilitation of persons who are engaged in the act of begging. As per the 2011 census, total people who are engaged in this act of begging stand at about 4.13 lakh. Of course, this figure would have increased by now, uh, because we have not yet received the data of 2021 census. And what is this Smile project? So it's an umbrella scheme called Smile, support for marginalized individual for livelihood and enterprise. It provides welfare measures to the transgender community and to the people who are engaged in the act of begging. So this scheme is basically for two category of people, and the aim is to strengthen and expand the reach of their rights via giving them social security. It is being done with the support of state governments, UTs, local urban bodies, voluntary organizations, etc. And the scheme is being implemented by the Ministry of Social Justice and Empowerment. So, because this scheme is catering to the needs of two category of people, the transgenders and the people who are engaged in the act of begging. So, for the comprehensive rehabilitation of welfare of transgender person scheme, provisions have been made for providing scholarships to the transgender students. Even a transgender protection cell has been established for their healthcare needs. Also, this scheme is catering to PMJ scheme, of course. Okay, so the next topic is so the next sub scheme is for the people who are engaged in the act of begging. So this scheme will focus upon surveying and identification, mobilization, and rescuing of these people who are engaged in the act of begging, and comprehensive resettlement is being planned for them. Okay. So the next topic is World Elephant Day. So this topic is important for your environment section. So World Elephant Day has been celebrated on 12th of August, and PM Modi has said that India is home to about 60% of all Asian elephants. And Agastya Malai, Government of India has also declared this as the new elephant reserve. So Tamil Nadu has gotten its fifth elephant reserve in the form of Agastya Malai. Now the total area under the elephant reserves in India stand at about 76,508 square kilometer, and these are available in 14 states. So the aim, so the government has also given a fresh push to curb unnatural elephant deaths, and the Environment Ministry is going to track casualties of elephants with the Railway Ministry now. It will also address human-elephant conflict. It will also look into the deaths of elephants in Odisha through investigations. Separate management plans for elephants is also being envisaged. So, what is the background? So, the 2017 census by Project Elephant says that about 60% of global elephant species currently lie in India. Uh, about this World Elephant Day, it was, of course, officially founded on August 12, 2012 by Patricia Sims and the Elephant Reintroduction Foundation. Since then, it has been celebrated annually now. And these Asian elephants, let's also see about these Asian elephants. So, of course, India is the natural home to the largest population of Asian elephants. It is also found in Nepal, Bangladesh, Bhutan, and Myanmar. These are categorized as endangered species, and they are protected under the Schedule 1 of the Wildlife Protection Act of 1972. Currently, the world has 50,000 to 60,000 Asian elephants in the world, and 60% of the population lies in India only. Even the Indus Valley civilization had engravings of Asian elephants on their seals. So it means that these elephants have been present at that time also. So what is this Project Elephant? Of course, it's a centrally sponsored scheme, and it was launched in February 1992 for the protection of elephants, their habitat, and their corridors. So the next topic is coastal ecosystems, and this topic is also important for your environment section. So recently, CAG has submitted a report in Parliament, and it has conducted an audit of the conservation of coastal ecosystems in India from 2015 to 2020. It has pointed out several irregularities in this in the coastal regulation in India, and it has said that Ministry of Environment is yet to notify National Coastal Zone Management Authority as a permanent body, which means that it is currently functioning as only an ad hoc body. Even the expert appraisal committees, which consists of scientific experts and senior bureaucrats, is not being present during project deliberations, and
even the EAC is functioning with less than half of its members. So state coastal zone management authorities have also not been constituted by certain states. Even the district level committees lacked participation while the projects were being approved. Several instances were reported when the projects were approved despite the adverse environment impact assessment reports. So let us also see about the coastal zone regulation in India. So these are the notifications issued by the Ministry of Environment under the Environment Protection Act of 1986, and the aim is to govern human and industrial activity close to the coastline so as to protect the fragile ecosystems near the sea. So these are categorized into four, of course, categories. The first one is the most ecologically sensitive areas. These are the mangroves, coral reefs, biosphere reserves, etc. And almost no new construction is permitted in these area except of course certain exceptions, like the projects for Department of Atomic Energy, etc. And between the low tide line and high tide line, the areas which are not ecologically sensitive, certain activities are permitted like exploration and extraction of natural gas, construction of basic amenities like schools, roads, etc. In the CRZ2 category, that is the shoreline areas, these are the areas which are developed up to the shoreline and they fall within the municipal limits. The certain buildings are permissible on the landward side of these areas. Even the desalination plants are permissible also. In the third category, these are the undisturbed areas. So these are the relatively undisturbed areas which do not fall under the category 1 or 2, and they also include rural and urban areas. Between 0 to 200 meters of from high tide line will be a no development zone where no new construction will be permitted. Only certain activities will be permitted like agriculture, forestry, etc. Between 200 to 500 meters of HTL, construction of houses for local communities and tourism projects will be permissible. Of course, these definitions are being proposed to be changed by the draft coastal regulations zone amendment rules. But of course, as they have not yet been notified, so we are not covering them as of now. So the fourth category, the territorial area, consists of the aquatic area which lies from the low tide line up to the territorial limits, and no restriction is there on the traditional fishing undertaken by local communities in such areas, but the untreated sewage and solid waste should not be let off in such areas. So who are the agencies which are implementing these coastal regulation notifications or coastal regulation zones, who are protecting these zones? So at the national level, this National Coastal Zone Management Authority is functioning at the central level, and at the state level, the state or union territory coastal zone management authorities are functioning. At the district level, the district level committees are functioning to protect the coastal zones of India. So the next topic is chronic fatigue syndrome. So this topic is also important for your social issues. A woman from Bengaluru has recently filed a petition to the Delhi High Court because she wants to stop her Noida-based friend who is trying to visit Europe to undergo physician-assisted euthanasia because she is suffering from chronic fatigue syndrome. So what is this chronic fatigue syndrome? So it is also called myalgic encephalomyelitis. It affects the nervous system, immune system, and the body's production of energy. The U.S. Institute of Medicine also proposed the term systemic exertion intolerance disease instead of course, chronic fatigue syndrome. Why it happens? So, of course, the causes are still unknown, but some people believe that potential triggers could include viral or bacterial infections, hormonal imbalances, or even genetic predispositions. Currently, there is no specific test for identifying this syndrome, but the doctors currently rely on medical examinations, blood, and urine tests. People from between the age of 40 to 60 years are prone to this disease, and currently there is no specific cure or treatment for this CFS. Okay. So the next topic is swastikas. This topic is also important for your art and culture section. So recently, the second state of Australia, that is the New South Wales. So of course, New South Wales has become the second state in Australia to criminalize the display of swastika
but it has allowed, of course, the use of it for educational and religious purposes. Swastika is important for our civilization because it has a Sanskrit root, which because it means good fortune and well-being. It's an auspicious symbol for Hindus, and unlike the black Hakenkreuz of the Nazis, swastika is used by Indians for in red and yellow color, and it is not tilted to the right, and unlike the Nazi swastika. Okay. So the next topic is World Sanskrit Day. So this topic is also important for your art and culture section. So PM Modi has recently extended his wishes to the people on the occasion of World Sanskrit Day, and this day is also known as Vishwa Sanskrita Dinam, and it is celebrated on the Shravan Purnima, that is the Purnima day of the Shravan month. This year it was celebrated on 12th of August, and the Sanskrit organization called Sanskrit Bharatiya is involved in the promotion of this particular day. So these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.